Hello everyone. Yeah, so this is Madhav here. Uh, so आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा आर्किटेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मैंने ये बुक लिंक्डइन से आई हैव रिसीव्ड। आई एम लॉग इन ऑन लिंक्डइन। सो यहाँ पे आपको 365 डेटा साइंस 165 डेटा साइंस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अगर आप लोग डेटा साइंस के लिए इंटरव्यू के लिए डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए ये बुक में एक ओवरव्यू दिया है। So author है लिया वेल्चनोव, नेड क्रेस्टेव, एली कैलोयानोवा and Martin Ganchow. Okay, I might be pronouncing not proper name, but ये authors है जिन्होंने बुक लिखा हुआ है। यहाँ पे ये बुक में क्या दिया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा साइंस इंटरव्यू क्वेश्चंस, डेटा साइंटिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। जनरल डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, टेक्निकल डेटा साइंस इंटरव्यू क्वेश्चंस, बिहेवियरल क्वेश्चंस, ब्रेन टीजर्स जो आप लोग को थोड़ा इधर उधर लाइक घुमा के ब्रेन टीजिंग्स करके जो भी पूछ सकते हैं, गैस एस्टीमेट, ये डेटा साइंटिस्ट इंटरव्यू के लिए हो गया। सेकंड पार्ट में है डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। जनरल डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, टेक्निकल सेम डेटा जो ऊपर दिया है उस तरह से डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस है। थर्ड इज बिहेवियरल क्वेश्चंस, ब्रेन टीजर्स और गैस एस्टीमेट। सॉरी गाइस। देन बीआई एनालिस्ट, अगर आप लोग को बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो किस तरह का इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा, जनरल बीआई एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आएंगे, टेक्निकल बीआई आएगा, बिहेवियरल क्वेश्चन आएगा, ब्रेन टीजर आएगा, गैस एस्टीमेट आएगा और डेटा इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चंस और डेटा आर्किटेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। ये 5 टॉपिक के ऊपर ये पूरा बुक डिपेंडेंट है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा साइंटिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इंटरव्यू में आप जाओगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना तो आना ही चाहिए, व्हाट यू आर, आप किस तरह से लाइक यू आर कम्युनिकेटिंग और किस तरह से। ओके, तो दिस विल probably the very first question of the कोई भी इंटरव्यू में ये फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, जनरल क्वेश्चन। वो यू नीड टू अवॉइड टेलिंग द स्टोरी ऑफ योर लाइफ। आपको स्टोरी बताना बंद करना पड़ेगा। यू डोंट वांट टू पॉज आफ्टर 3 sentences either. Your answer become even more important as it sets the tone for the rest of the conversation. Like आपका टोन एकदम सही होना चाहिए, टोन जैसे एकदम लो हाई लो टोन में नहीं होना चाहिए। The hiring manager interested in seeing whether you strongly structure the answer to very broad question. Tell the interviewer only facts you want to tell him, want to know. Your personal life with 1 or 2 sentences. I was born and raised in the UK. I moved to New York. यानी अगर इंडिया में हो तो I born in Bharuch state or then I moved to different cities for educational purpose because it's a vibrant city and like dynamic environment where you want to you are ready to work in dynamic environment. That's why you move, so that you are a perfect fit for the job under consideration. You have a right education, your previous work experience valuable to asset for the asset. Like this should be asset to the firm. You should be asset to the any firm. Why you're excited about this posture, how your strengths match you're looking for. Perhaps a script that address each of the points above. Practice answering. Tell me about yourself question. What relevant work experience do you have? Which leaves like space for make sure that you are well prepared before the interview. Relevant experience क्या क्या आप लोग को ये काम, सपोज आई एम असाइन यू सम वर्क के, ये एक प्रोजेक्ट है डेटा साइंस का, उसमें आपको 6 months के अंदर ये प्रोजेक्ट फिनिश करके देना है। यानी आपके पास टीम होगी, आप अकेले तो नहीं होगे। Your work experience is going to be useful in handling the responsibilities in this situation. Try to be specific and point out which are activities that you need to know in previous jobs and how they would allow you to perform well at the new position. Where do you see yourself in 5 साल? 5 साल के आप कहाँ पे देखना चाहोगे? अगर हम आपको हायर कर रहे हैं, if I am hiring you, so where you want to see yourself?
It's a dangerous question also. Interviewer wants to know whether the company will be able to count on you long run, whether you are looking for a job, you are for a career. Most firms want to choose a person that believes in a future with company. They don't want to invest a great deal of time and money in order to recruit and train someone who will live in 2 years. यानी आप 2 साल में छोड़ के चलोगे, उनको कंपनी क्यों रखेगी? The hiring manager wants to understand exact how you think. Perhaps you intend to gain 1 or 2 years practical work experience and join your family's business. Maybe you want to start your own company, or maybe you believe that 1 or 2 years is a would allow you to pursue much more interesting opportunities with other companies. मीन्स ये सब चीजें आपको माइंड में जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग वेरी विल बी 5 years, which is kind of dangerous above mentioned reason, you can talk about exactly what you would like to learn in next 5 years. You can say that you want to become a very good at what you do, gain hands-on practical experience managing people, and that you always wanted to become a technical expert in the field which you are. Like you are going to become a technical. अगर आपको CTO बनना है, tech lead बनना है, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, 5 साल में तो आपकी पोस्ट अच्छी हो जाएगी, PM तक की तो हो सकती है, प्रोजेक्ट मैनेजर. As a closing statement, you can add that you are exciting about this. You are very excited. You are very excited about this opportunity. आपको बहुत exciting है. आप अगर आपको ये जॉब दिया जाए तो you are very excited to work on this opportunity. By spinning the question in the direction, you are able to achieve three things. First, you protect yourself from answering a potentially dangerous question. Second, you will be able to emphasize that the main driver in your career is professional growth and self-improvement. And third, you are able to affirm that you are excited about the job opportunity sounds. Okay. How do data scientists use statistics? Data scientists statistics किस तरह से use करते हैं? In almost everything they do. Good enough for me in a. It's a tricky question. It's not a hard also. You will maintain your composure and structure a nice sounding answer. One of the better ways to frame the question within the framework. You can work on creating a smaller version of you also. Don't leave to interview. Mathematics, probability, statistics, economics, programming, data visualization, machine learning, and modeling in general. Now we could simply this framework by ignoring mathematics as a pillar, as a basis. Then we could assume probably is an integral part of statistics, economic, and programming. One could argue that machine learning is a separate field, but it is actually an iterative programming efficient application of statistics. Models such as linear regression, logistic regression, decision trees are all developed by statisticians. Their predictions are nothing more than statistical inferences based on the original distribution of the data and making assumption about the distribution of the future values. We have a deep learning. Well, one of the most common method for back propagation called stochastic gradient descent. Data visual also could fall under the umbrella of descriptive statistics. After all, visualization usually aims to description. Okay. One notable exception is the data processing. That's an activity which mainly relate to programming and often does not solve knowledge. Okay, so हम लोग यहाँ तक रखते हैं. We'll see you in the next video. Thanks. We'll see in the next video for other topics.